वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम ओपन लूप क्लोज लूप के जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक क्लोज लूप सिस्टम की, जिसमें कि आपके पास एक इनपुट है, एक कंट्रोलर है, एक प्लांट है और एक आउटपुट है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इनपुट और आउटपुट दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। So if they are not connected, so we can say कि input is not depending upon output, right? So that is not depending upon output. So it means हम इसको ऐसे भी define कर सकते हैं कि इनपुट इज नॉट ए फंक्शन of output. So we can define in that manner also. Right? So open loop control जो होता है उसमें आपका इनपुट आउटपुट से रिलेट नहीं करता। अगर वो रिलेट करता है तो वो क्लोज लूप सिस्टम्स बन जाता है, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन दैट सिनेरियो कि एनी फिजिकल सिस्टम विच डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर एनी वेरिएशंस इन द आउटपुट साइड, दिस इज द आउटपुट साइड, इन द आउटपुट साइड is called open loop control. Such a system may be represented by this block diagram. In these kind of systems, the open loop systems जिसकी हम बात कर रहे हैं, the output remain constant for a constant input. अगर input constant है, अगर input constant है, because कहीं कंट्रोलर ही नहीं है, तो आउटपुट भी क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है। प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन अनऑल्टर्ड, external conditions. So that is the condition for constant input and constant output. The output may be changed to any desired value by appropriate changing the input signal. But variation in the external conditions or internal conditions parameters of the system may cause the output to vary from desired value in a uncontrolled fashion. The open loop control is satisfactory only if such fluctuations can be tolerated or system components are designed and constructed so as to limit the parameter variations and environmental conditions are well controlled. So there is no feedback action. There is no feedback action. So these are the bullet points of defining the open loop control. Now we can go for closed loop control also. अगर हम closed loop control की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक प्लांट है, एक्सटर्नल disturbances भी है और there is an input going on to the plant and through the control signal an error signal ET is going to generate. There is a comparator who going to compare the command input and the feedback from the output through the feedback element. There are certain noise also which are inserted into the feedback element and BT is there and ET will be generated. So ET will be like the difference of the command input and the feedback input, right. So this ET will going to defined as a error signal, right, and this is controller who is going to decide कि एरर सिग्नल मेरे पास क्या आ रहा है,
and what kind of output I am going to give to the plant, so that the plant will work as a process which is going to produce certain outputs. So generally we are going to define the block diagram in that manner. So the presence of disturbance input, इसको हम लोड डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, इन ए प्लांट, एंड ए नॉइस इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ड्स टू द फीडबैक इज एन एग्जाम्पल. जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम्स की, तो उसमें ये भी जनरेट होता है कि भाई आपका जो आउटपुट है वो किस तरह से वेरी होगा. So this basic control loop with negative feedbacks respond to reduce the error between the command input and the controlled output. So further जैसे जैसे हम इसको carry on करेंगे, वैसे वैसे हम इसको understand करेंगे. In very next video we are going to generate the differences between these two kind of signals. So this is a small video, hope you can understand. Please motivate us by liking and subscribing the channel.